स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से इस पे बात करते हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि आईकॉम पार्ट 2 के पेपर्स एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि देखा जाए कि कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, और आप अगर उनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपके लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज इंग्लिश मीडियम के हवाले से क्वेश्चंस को देखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, यकीनन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम? हाउ द वर्ड बैंक इज डिराइव्ड? हु इज मनी लेंडर? हाउ द वर्ड bankrupt is derived? What do you mean by bankrupt? What do you mean by promoters? Define the promotion of bank. What is the prospectus of bank? Define memorandum of bank. Define article of bank. Define underwriters. इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है, what do you mean by cooperative banks? Define statutory bank. What do you mean by saving banks? What do you mean by foreign banks? Define foreign exchange banks. Define trustee. What do you mean by cash reserve of bank? Define commercial bank. Define balance sheet of bank. Define e-banking. Define credit card. Define ATM. Define PIN code. Define debit card. Central bank is the banker's bank. Explain it. Define central bank. Write down 4 duties of central bank. Write down the principles of note issue. Write down the methods of note issue. Define monetary policy. Who is the last resort of banks? स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको बड़ी केयरफुली आपने नोट करना है और याद करना है। नेक्स्ट आता है, डिफाइन क्लियरिंग हाउस, डिफाइन इंटर बैंक रेट, डिफाइन इन्फ्लेशन, डिफाइन रेशियो ऑफ इन्फ्लेशन, डिफाइन डिफ्लेशन, डिफाइन शेड्यूल्ड बैंक, डिफाइन नॉन शेड्यूल्ड बैंक. What is the limit of paid up capital of a non-scheduled bank fixed by the SBP, State Bank of Pakistan? Next question जो आता है वो है, define scheduled bank, define fixed deposit account, define profit and loss saving account. What are the 4 major types of bank accounts? Define bank account, define current account. What is the rate of deduction of zakat on current account? Define 4 characteristics of foreign currency account. What do you mean by basic banking account? What do you mean by foreign currency account? Define passbook. Define pay-in slip. Define checkbook. Define customer of bank. What are the kinds of customer of banks? What is meant by joint customer? What do you mean by minor customer of bank? Define partnership firm as customer of bank. Write down means of bank funds. Write 4 principles to issue a loan. Define qarze hasna. Define loan. Define kinds of loans. What are the kinds of loans according to time? Next question है, define guarantee. What do you mean by secured and unsecured loans? Define short-term loan. What is meant by term mortgage? Next question आता है, how the commercial bank discount bills of exchange. Define personal guarantee. Write down the name of 4 types of guarantee. Define lien. Write down the parties of guarantee. Define check. Write down the 3 major kinds of check. Or what do you mean by crossing of check? Next question जो है वो है, what is meant by holder of check? Define open check. Define negotiable instruments. Define cross check. Define order check. What is meant by endorsement?
व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क। डिफाइन काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट डाउन 4 फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मेंट बाय द एक्सेप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये देखिए ये कितने सारे क्वेश्चन जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से आ रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पेपर में लाजमी आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो डिफाइन ओवरड्राफ्ट, फिर है पार्टीज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन प्रॉमिसरी नोट। डिफाइन IOU। Define stock exchange market of Pakistan. Define money order. Define letter of credit. Define postal order. और अगला क्वेश्चन है डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। राइट 2 important reasons about foreign exchange problem. फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सचेंज बैंक। What is meant by foreign exchange? Define objectives of foreign exchange control. Define spot exchange rate. Define exchange rate. What are the methods to determine the rate of exchange of currency? What are the methods of foreign payment? Define balance of payment. Define balance of trade. Define importance of money market. Why the NBP, National Bank of Pakistan, is incorporated? Define NBP. Names of 4 important departments of SBP, State Bank of Pakistan. Define ZTBL, Zarai Taraqqiyati Bank Limited. Write down 4 duties of ZTBL. Define मुशारका. Define मुदारबा. ये इस्लामिक बैंकिंग के पोर्शन में से ये क्वेश्चन है। Write down 4 merits of Islamic banking. What do you mean by interest free banking? और define रिबा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनकी लिस्ट तो खासी लंबी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।